Hello dear students, today we are going to discuss about why is friction considered a necessary evil. Means friction is not good in our life but it is beneficial also. How then let us discuss the advantages of the friction. So we will get the answer of this question. Dear student, first thing, nails and screws hold the wooden boards and wall together due to friction. दीवार के साथ हम वुडन पीसेस लगाते हैं या टेबल में वुडन पीसेस लगाते हैं तो वो नेल्स की हेल्प से होता है और नेल और वुडन में अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो इट विल बी नॉट पॉसिबल टू फिक्स एनी टू वुडन पीसेस टुगेदर. Second thing, we are able to walk on the road due to the friction between ground and the soles of our shoes. क्योंकि शूज़ के नीचे जो सोल होती है उसकी और ग्राउंड की फ्रिक्शन होती है. दैट्स वाई वी आर able to walk on the ground due to friction. Third thing, the friction between the road and the surface of the tires permits safe driving. ड्राइविंग सेफ होती है इससे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगी तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी. Next advantage is we are able to write on paper because of the friction between the pen, pencil and paper. That is why it is very difficult to write on the glazed or waxed paper. Even though you can try on plywood also, we will be unable to write on plywood because lack of friction between pen and plywood. Next, the application of the brakes to stop a cycle, scooter or car etc. is possible only due to the friction between the brake lining and the rim of the wheel. Because when we apply the force on the clutch of the bicycle, indirectly we are trying to stop the cycle by applying force on the rim of the cycle. indirectly हम रिम पे फोर्स अप्लाई करते हैं, करते तो हम फोर्स अप्लाई क्लच पे हैं बट वो ब्रेक लाइनिंग के थ्रू रिम पे फोर्स हम अप्लाई करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, ड्यू टू दीज रीजंस we can say the friction is the necessary evil. So now dear students, we will discuss about the disadvantages of friction. Friction is considered wasteful because number one, friction between various parts of machines leads to a loss of energy. Therefore friction reduces the efficiency of machine. You can check dear students, during the summer when the fan works continuously for several hours and the motor of the fan becomes hot due to the friction inside the working parts of the motor, and due to overheating sometime motor stops working. Second disadvantage, dear students, friction cause wear and tear of moving machine parts. Means when the machine works continuously for several hours, few of its parts wears, means वो घिस जाते हैं and damage the machine. Here dear students, I will add one more example. Our sole of our shoes and tires of our vehicles wears, you might have seen हमारे शूज़ के जो नीचे के सोल हैं वो घिस जाते हैं, थोड़े समय के बाद टायर्स घिस जाते हैं, तो दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. So now dear students, we will discuss about the ways to increase the friction. Many times the friction is deliberately increased to meet the requirements of the situation, क्योंकि friction की हमें ज़रूरत पड़ती है लाइफ में. For example, sole of the shoes and tires of automobiles are made corrugated. Corrugated means, dear student, the bulging design, zigzag design, which is on the upper part of the tire you can see and the sole of the shoe, and this design increase friction and to provide a better grip on the ground road to prevent skidding. Means dear students, ये हमें और हमारी गाड़ियों को स्लिप होने से बचाती है. Second way to increase the friction, dear students, the brake pads in automobiles are made rough to increase friction between the lining and rim of the wheel. Means dear students, the brake pads are made rough, means they are made up of rubber because rubber is rough, and this is made because whenever we want to stop our vehicle in emergency situation or normal situation, and it stops quickly whenever we want. Next dear students, wrestlers and kabaddi players rub their hands with soil for better and firm grip.
ड्यू टू इंक्रीज्ड फ्रिक्शन बिटवीन देयर हैंड्स एंड द ओपोनेंट्स बॉडी। जो कबड्डी प्लेयर होते हैं और रेसलर होते हैं वो हाथों में मिट्टी वगैरह लगाते हैं ताकि वो ओपोनेंट्स टीम के प्लेयर को अच्छे से पकड़ पाएँ, उसको रोक पाएँ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फर्स्ट वे इज बाय पॉलिशिंग द surfaces. Rough surface can be made smooth by polishing. Polishing removes hills and valleys from the surface. जो ऊपर नीचे उभार होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं पॉलिश करने से। Therefore polishing of the surfaces reduce the friction. उससे फ्रिक्शन कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वुडन बोर्ड, यू कैन सी द डिफरेंस, वन इज पॉलिश्ड साइड एंड वन इज अनपॉलिश्ड साइड। सेम वे द कंक्रीट फ्लोर, यू कैन सी वन इज पॉलिश्ड एंड वन इज unpolished. So by polishing we can reduce the friction. Next way, dear students, by applying oil or grease on the surfaces. Oil and grease forms a thin layer between the two surfaces. Thus a lubricant separates the two surfaces. जो lubricant है मीन्स ऑयल या ग्रीस है वो दो surfaces को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, उनमें लेयर बन जाती है ऑयल की या ग्रीस की, जिससे रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सर्फेसेज। दो सर्फेसेस में इंटरलॉकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं एंड दस रिड्यूस द फ्रिक्शन। सेम वे डियर स्टूडेंट्स, सोप सोल्यूशन ऑल्सो एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, दैट इज़ वाई वी टेंड टू स्लिप ऑन द फ्लोर इफ़ इट इज़ कवर्ड विद सोप सोल्यूशन। कई बार हम स्लिप हो जाते हैं सोप सोल्यूशन की वजह से, तो वो भी लुब्रिकेंट की तरह ही एक्ट करता है। नेक्स्ट वे, बाय स्प्रिंकलिंग अ सॉफ्ट स्लिपरी फाइन पाउडर ऑन द सर्फेसेज। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, वाइल प्लेइंग कैरम बोर्ड sometime you might have noticed that the striker do not move as fast as we want, so that time we use to sprinkle powder on the carom board, and which reduce the friction between the striker and the carom board, and due to this the striker starts moving more fastly. Next way to reduce the friction, dear students, by using wheels, ball bearings or roller bearings. When a body rolls over a surface, the force of friction is much lesser than that of a flat surface. फ्लैट surface से जब फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और बॉडी जब रोल करती है उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है। दैट्स वाई फ्रिक्शन इज़ बीइंग रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स और ball bearings. For example, dear students, you can see the pick of tire of bicycle is shown. Here the ball bearing is used in the middle of the tire, which helps to reduce the friction and makes the bicycle to move more fastly. Next, dear students, by streamlining the body of an object. Properly shaped bodies called streamlined, and it experience less friction from air or water. Bodies of aeroplanes, rockets, ships, etc. are streamlined. ये streamlined shape होती है इनकी आगे से थोड़ी पक्षियों की तरह, जैसे आपने देखा होगा. Birds and fishes also have streamlined bodies, and it helps to reduce the friction. So dear students, these were the method to reduce the friction.